Welcome students in this important video lecture organized by Department of Mathematics, Devgiri College, Aurangabad. Myself, Dr. Ramesh Shinde. We are going to discuss about mathematics paper first. Now, the name of chapter is pair of lines. In short, we call it as POL. Before going to start actual pair of lines, we discuss some basic concepts regarding with this chapter pair of lines. In 11th standard, you discuss about the coordinate system. Dear students, coordinate system there are two axes mutually perpendicular to each other at origin. The horizontal axis is known as x-axis, vertical axis is known as y-axis. This system of coordinates of a point in a plane is known as coordinate systems, students. Now, Cartesian coordinates. Cartesian coordinates. Any point having coordinate x, y is known as Cartesian coordinates. Now the coordinates x, y are called as Cartesian coordinates. Distance of point from y-axis is x coordinate and distance of point from x-axis is y coordinates. This is about the Cartesian coordinates. Now, next one we discuss the basic thing, that is distance formula. Distance formula. Suppose let us consider A and B be 2 points. A having coordinates x1, y1, B having coordinates x2, y2. अगर दो पॉइंट्स हैं, लेट A x1, y1 है, B x2, y2 है, then distance AB equals to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is about the distance formula. By using this formula, we have to calculate the distance between 2 points. Now, the next point, application of distance formula. What are the applications of distance formula? Applications of distance formula. Dear students, collinear points. When 3 points are said to be collinear, 3 points are said to be collinear. If sum of distance of between 2 points is equal to third point. If sum of distance between 2 points is equal to third point. See here, student, there are 2 points A, B and C. AB plus BC equals to AC. Then we say that these 3 points are said to be collinear. Next point is application of distance formula. 3 points in a plane
three non-collinear points, in a plane forms a triangle if points would be form a equilateral triangle. Equilateral triangle if length of all sides are equal. If length of all sides are equal. Now, if this triangle is isosceles, if length of two sides are equal, if length of two sides are equal, and it forms a right angle triangle, if sum of squares of two sides is equal to third side, is equal to third side. These are the applications of distance formula. अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं और वो अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, थ्री इसमें अगर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, अगर दो साइड की लेंथ सेम है तो वी कॉल इट एज इट फॉर्म्स आइसोसेलेस ट्रायंगल. If sum of squares of two sides equal to third side, then we say that it forms right angle triangle. And if length of all sides are equal, then we say that three non-collinear points form a equilateral triangle. One more application of a distance formula. 4 points in a plane. 4 non-collinear points forms number 1 a square if all sides are equal, if all sides are equal and diagonals are equal. It forms rhombus. If 4 sides are equal. Number 3, rectangle. In a rectangle, 4 sides are opposite sides are equal. Opposite sides and diagonals are equal. Opposite sides and diagonals are equal. Means opposite sides are equal and diagonals are also equal. Number 4, parallelogram. Parallelogram, opposite sides are equal, only opposite sides are equal
There is one note in the rhombus. Diagonals bisect each other. And in parallelogram, diagonals are equal. These are the applications of distance formula. We know the distance formula, but the applications of distance formula in this way. 4 non-collinear points हैं. अगर वो 4 non-collinear points square form कर रहे हैं, we have to prove by using the distance formula. अगर चारों sides equal है, diagonals equal है, then we say that the given 4 non-collinear points form a square. Rhombus, if 4 sides are equal and diagonals bisect each other, then we say that the 4 non-collinear points form a rhombus. Rectangle, opposite sides are equal, diagonals are equal, diagonals bisect each other, then we say that the 4 non-collinear points form a rectangle. Parallelogram, opposite sides are equal, diagonals are equal, then we say that 4 points forms a parallelogram. Diagonals bisect each other at right angle. And diagonals bisect in midpoint. ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ लाइंस, इसके बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स हम डिस्कस कर रहे हैं. पेयर ऑफ लाइंस, POL, in short we call it as POL, पोल. इसके बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स जो है Dear students, सेक्शन फॉर्मूला अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए ऑलरेडी डिस्कस किया है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला. लेट A x1 y1 and B x2 y2 A x1 y1 and B x2 y2 are 2 points. P x comma y divides AB. P of x comma y divides AB, number 1, internally in the ratio. Internally in the ratio m is to n, then अगर P इंटरनली डिवाइड करता है तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट? mx2 plus nx1 upon m plus n. See the x coordinate of P. my2 plus ny1 upon m plus n. ये y coordinate होगा पॉइंट P का. सेक्शन फॉर्मूला. नंबर 2, externally in the ratio m is to n. Externally in the ratio m is to n, then external section formula होगा स्टूडेंट्स P equals to mx2 minus nx1 upon m minus n, comma my2 minus ny1 upon m minus n. This is about the external section formula. Now third one is midpoint formula. Equally in the ratio, that is the midpoint formula.
मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? P इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, क्योंकि जो इंटरनल फॉर्मूला में जो रेशियो m/n होता है वो रेशियो मिड पॉइंट फॉर्मूले में 1:1 होता है. सो x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 2 y1 plus y2 upon 2. This is about the section formula. Now we discuss about the basics and fundamentals of pair of lines. जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट वन सेक्शन फॉर्मूला. नेक्स्ट वन द सेंट्रॉइड फॉर्मूला. सेंट्रॉइड फॉर्मूला. Centroid of a triangle, you know that. Let A x1 y1, B x2 y2, and C x3 y3 are vertices of triangle ABC, and Z is a centroid of triangle ABC. The centroid of triangle ABC. Then, according to centroid formula, the coordinates of G are x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. This is about the section सेंट्रॉइड फॉर्मूला. सेंट्रॉइड क्या होता है स्टूडेंट? कंसीडर अ ट्रायंगल एबीसी. अगर बीसी का मिड पॉइंट डी है, एसी का ई है और एएफ है. एडी इज द मेरिडियन ऑफ ट्रायंगल. A line joins vertex and midpoint of opposite side is called as median. B is also median of triangle. And CF is a median of triangle, and point of intersection of medians of a triangle is called as centroid. Point of intersection of medians we call it as centroid of triangle. And centroid formula है x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Now discuss about the locus. क्या definition है student locus की? A set of points which satisfies certain geometrical conditions. This is about a locus की definition है. locus क्या आता है? A set of points will satisfy certain geometrical condition. For example, circle, it is the locus of point. Perpendicular bisector is a locus of point. Now we discuss about the line. Line is the locus of a point such that any two points lies on a line defines same direction. This is about the line. Now next है inclination of a line. Next definition है inclination of a line. क्या है inclination? See your student, this is the Cartesian coordinate system. ये Cartesian coordinate system है. इस पे suppose the line makes an angle theta with the anticlockwise direction of x-axis.
that is called as inclination of line. लाइन एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है उस एंगल को कहते हैं स्टूडेंट इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन. इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन makes an angle theta with anti-clockwise direction of axis or positive direction. We call it as positive direction. Anti-clockwise direction of x-axis. Then theta is called inclination of line. Theta is called inclination of line. अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल बनाती है और वो एंगल थीटा है, then we say that theta is called as inclination of line. Now student, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के बाद हम डिस्कस करते हैं स्लोप ऑफ लाइन. इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, if theta is the inclination of line, then tan theta is called as slope of line. tan theta क्या होता है स्टूडेंट? स्लोप ऑफ लाइन होता है स्टूडेंट. थीटा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है तो tan theta is called as slope of line. नंबर 1, उसमें स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो थीटा क्या होगा? 0 होगा. तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0. नाउ स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. Slope of y-axis or line parallel to y-axis is tan 90 equals to not defined, where theta जो inclination of y-axis होता है वो 90 डिग्री होता है स्टूडेंट्स. इफ x1 y1 and bx2 y2 are 2 points, then slope of line segment AB, slope of line segment AB is y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is about the slope of line passing through 2 points. Now next, equations of line. Next point is students, equations of line. Now number 1, equation of x axis. सीरियल स्टूडेंट, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है. एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक बात कांस्टेंट होती है. एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है. The equation of x-axis is y equal to 0. Now equation of y-axis,
x इक्वल्स टू 0, जो y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पे आप कहीं भी पॉइंट लेते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस is y equals to constant where k is constant। जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, समझो लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, at x equal to 2 y equal to 2 को इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को, तो इस लाइन पे आप कहीं भी पॉइंट लेते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहता है 1, 2, 2, 1, 2, -2, -2, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, then equation of line parallel to x axis is y equals to constant। Similarly, equation of line parallel to y axis is x equals to constant। Equation of line parallel to x axis parallel to y axis is x equals to constant। जो लाइन y एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन होता है स्टूडेंट x equals to constant। Student, we discuss about the some equations of lines in different form। Equation of line in slope point form, slope point form। सपोज हम एक इक्वेशन निकालना है लाइन का स्लोप दिया है एंड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन लाइज ऑन दैट लाइन, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन? इक्वेशन ऑफ लाइन having slope m, equation of line having slope m and passing through x1 y1 and passing through x1 comma y1 is y minus y1 equals to m into x minus x1। Equation of line passing through a point and having slope m is। Next, equation of line passing through 2 points, that is we call it as 2-point form। Equation of line passing through x1 y1 and x2 y2 is equation of line passing through x1 y1 and x2 y2 is y minus y1 upon x minus x1 equals to y1 minus y2 upon x1 minus x2, provided that x1 is not equals to x2। This is the equation of line is 2-point form। Now one more form, slope intercept form। Equation of line having slope m and y-intercept c is इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर उस लाइन का स्लोप m है और y इंटरसेप्ट c है तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगा y इक्वल टू mx प्लस c। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल्स टू mx प्लस c। नंबर नेक्स्ट, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, सपोज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, a point intersect x axis at A, y axis at B, तो x इंटरसेप्ट A होता है, एक इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट B होता है।
double intercept form, equation of line having x intercept A and x intercept A and y intercept B is and y intercept B is x upon A plus y by B equals to 1. This is the equation of line in double intercept form. Next one is the normal form, equation of line in normal form. Then what is meant by normal? Suppose this is the Cartesian coordinate system. अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन दी है, इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मालूम नहीं है, then normal means a perpendicular drawn from origin to that line. अरे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं ओरिजिन से उस लाइन पे, दैट इज नोन एज नॉर्मल. अगर इस नॉर्मल की लेंथ p है और ये नॉर्मल का इंक्लिनेशन अल्फा है, then equation of line in normal form is equation of line in a normal form is x cos alpha plus y sin alpha equals to p, where alpha is inclination of line, inclination of normal, and p is length of normal. ये जो नॉर्मल लाइन है उसका इंक्लिनेशन अल्फा है और उसकी लेंथ p है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. नाउ नेक्स्ट, द जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इज general equation of line is ax plus by plus c equals to 0. This is the general equation of a line. तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? Therefore slope of this line is minus a by b. स्लोप का फॉर्मूला अगर इक्वेशन दिया है तो लाइन स्लोप निकालते हैं minus to the coefficient of x upon coefficient of y. Now equation of line passing through origin is equation of line passing through origin equation of line passing through origin is ax plus by equals to 0. Therefore slope of this line is again minus a by b. जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट होती है, जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है उसमें कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट होती है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इफ m1 and m2 are slopes of lines and theta is the acute angle between the lines, theta is the acute angle between the lines, then tan theta equals to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, m1 minus m2 into upon 1 plus m1 into m2. इसमें कंडीशन है, if m1 into m2 is equals to minus 1, then lines are perpendicular. Lines are perpendicular. If m1 equals to m2, then lines are parallel. It's about the
condition for parallel and perpendicular lines. Point, perpendicular distance of perpendicular, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट इज perpendicular distance of x1 comma y1 from ax plus by plus c equal to 0 is given by. एक पॉइंट है, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से अगर हम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1 है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two parallel lines, perpendicular distance between two parallel lines ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equals to 0 is given by mod of c1 minus c2 upon under root a square plus b square. c1 minus c2 upon under root a square plus b square. This is the distance between two parallel lines. Now family of lines. If u equal to 0 and v equals to 0 are two lines, then u plus kv equal to 0 represent family of lines passing through the intersection of u into v equals to 0. Passing through the intersection of u into v equals to 0. U equal to 0, v equals to 0 are two straight lines. Then u plus kv equals to 0. It represents family of lines that passing through the intersection of u into v equals to 0. This is our the basics and fundamentals of mathematics, students. नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है उस स्टार्ट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.